Namaste बच्चों, welcome to today's class. So today we are going to see your next video. And children, before going into the class, I want you to tell you something. Hard work leads to success. So success, how it will reach you? When you are working hard. So I will tell you the short story for this success and hard work. When you are going in a way, a person or somebody is telling that there is a place where you can get everything made up of gold. If you go there, you can take all the gold and you can take the gold and you can carry with you and you can come. So that time your mind will be that you have to take all the gold, right? But one more thing he is telling that if you want to reach that place, you have to struggle more. You have to face more trouble. If you are ready to do, you can reach there. So the boy is started walking towards that, and he is going towards that with many struggles. He wants to face many problems. At last what happened? He is reaching to that place which is made up of gold, right? So children, why I am telling you that how that boy, he is struggling and he is facing all the troubles, and finally he went to his place. Like that, this is the time that where you have to work hard and where you have to face many troubles and where you have to cross many exams. At last what will happen? You will be seeking to the goal that you will be in a higher education. You can earn more money. If you see the trouble and struggle, you will not able to. For getting something, we have to lose something, right? If you are trying to struggle and if you are facing the problems in your life while education, it will leads you to the good place and good education, and it will help you to earn more money, and you will be in a correct place of working situation. You will be getting correct job, so that it will helpful for you to earn more money for your family, and you have to settle in your life. So don't see the struggle. Keep on working hard. Face all the problems. At last you will reach to the goal as a higher education, and you will be a collector or you will be a doctor and you may be an engineer, which will help you to earn money and settle in your life in a happy way. So this story tells us that when we are reaching the goal, at last what happened? That boy reached the goal and he got all the gold. Even though he has struggled, even though he has faced all the problems, finally what happened? Not considering the trouble and struggle, what happened? Finally he reached to the place full of gold. So that you have to work hard. So today we are going to see the class. Let us go to our class. So as we have seen all the chapters, that means lesson only, today we are going to see Balram Katha Ram Ka Vangaman or Chitrakoot Mein Bharat. So today I am going to teach you two lessons from Ramayanam, that is from your book Balaram Katha. Because we are having little portion in that, so we have to finish that also. So today's video, that means your 13th video, is about Balram Katha. The fourth lesson, Ram Ka Vangaman and Chitrakoot Mein Bharat. So these two lessons only today we are going to see. So this is the story of Ramayanam, which is written by Valmiki. What they are telling, that in this Ramayan also, if you see, Ram, Sita and Lakshman, they are struggling more to get the thorn, right? So after facing all the problems, after facing all the difficult situations, finally they are reaching their thorn, right? So that is only we are going to see now. So these two stories, what is going to happen, please listen carefully, then only you can understand. Let's go to the story. As I told you, we are going to see two lessons. First we are going to see lesson 4, Ram Ka Vangaman.
Okay, Ram ka Vangaman is nothing but how Ram, Sita and Lakshman, they three are going to the forest, and what is going to happen in this story, let us see. So please listen carefully. Now we are going to see lesson 4, Ram ka Vangaman. So in this story you can see that the starting one, that in the palace Ram, Lakshman and Sita, they are standing with everybody, and Dasharath, he is sitting in a chair and he is crying. For what? That now Ram, Lakshman and Sita, they three are in the situation of going to forest for leading their punishment. Okay. So as Kaikeyi, she is telling that my son Bharat only should get the throne. For that now Ram, he is giving all his things to Bharat and he is leaving the palace, and they have decided to go to the forest, and they have decided to live in a forest for 14 years. Okay, so this is only going to happen in this story. So Ram ka Vangaman, that is only, Van means forest, Gaman means living. So Ram ka Vangaman. So how they are leading their life in the forest, that we are going to see now. In this picture you can see Ram, Lakshman and Sita, and then Dasarath, Vishwamitra and Kaikeyi, they all are here. Now the Kaikeyi, she is very happy by this decision. But Dasarath, he is sitting in a chair and crying. Vishwamitra is trying to convince him. Now Ram, Sita and Lakshman, they are ready to move to forest. Here Ram, he is asking Sita to get ready. This is the time we have to go to forest. From this picture you can understand that Ram Katha Ayodhya Khand Ram ka Vangaman Mainik Bhalla द्वारा समझाया गया. So in this picture you can see Ram, Sita and Lakshman, they are getting the blessings of Dasarath and they are started leaving to forest. So in this, Dasarath, he is blessing his son Ram, Sita and Lakshman, and he is making them to make a move to a forest. That only we are going to see now. So here you can see that finally Ram, Sita and Lakshman, they are leaving to the forest through boat. So in this situation, what is going to happen, that only we are going to see now. What they are going to do in a forest for their 14 years, how they are going to lead their life in a forest. So in this picture you can see Ram, Sita and Lakshman, they are leaving for a forest through boat. Now let us see the story little briefly. राम को वनवास, कैकेयी के महल की ओर जाते हुए सुमंत्रा को अनजान डर ने घेर लिया. Now Kaikeyi, what she is saying, that Sumantra, he is moving to a palace, and what is going to happen, सुमंत्र ने देखा कि राजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं. So what he has seen, that राजा दशरथ, he is on the bed. कैकेयी ने सुमंत्र से कहा कि महाराज बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं. दैट दशरथ, ही वॉन्ट्स टू स्पीक विद राम. दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने का आदेश दिया. नाउ दे आर कॉलिंग राम. सुमंत्र राम को बुला लाए. लक्ष्मण भी साथ ने पिता को प्रणाम किया. दोनों भाई विस्मित थे. लोग समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है. तो द पीपल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई दशरथ इज कॉलिंग. महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया. राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए. देन ही सीइंग राम, ही इज़ वेरी परफेक्ट. जब उन्होंने होश आया तब भी वह कुछ बोल नहीं पाए. नाउ ही इज़ गेटिंग कॉन्शियस. हु? दशरथ. कैकेयी ने राम को बताया कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे. So what Kaikeyi is telling, that Maharaj Dasharath, he has given 2 promise to me. मैंने वे 2 वरदान मांगे हैं. He has given me. मैं चाहती हूँ कि राज्य अभिषेक भरत का हो. भरत only should sit in a throne, और तुम 14 वर्ष वनवास चले जाओ. You please go to forest. राम सत्यत रहे.
उन्होंने कहा पिता का वचन पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं वन जाऊंगा। Now what Ram is telling, no problem, I have to accept the promise of my father. So Bharat he will get the thorn and I will go to forest. कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। Now what happened? He after leaving the palace he went to meet her mother. उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी बहन का सारा हाल के सुनाया। Now Ram he has explaining all the situations of who is the mother of Ram, कौशल्या। लक्ष्मण क्रोध से भर गए पर राम ने उसे शांत किया। But लक्ष्मण he is getting very angry by hearing this, but Ram is convincing him। राम का वनगमन, राम वनगमन को भाग्य का उलट फेर मानते थे पर लक्ष्मण इसे कायरों का जीवन मानते थे। But Ram what happened, he is feeling his forest life as happy, but लक्ष्मण is not ready to accept that। लक्ष्मण ने राम से कहा आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम बोले अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। So now Lakshman is telling why you are not accepting the thorn. That time Ram is telling that which is not correct, I don't want that thorn, मैं वन जाऊंगा, I will go to forest। कौशल्या ने राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की। Now कौशल्या what her mother is saying, I will also come with you। पर राम ने कहा माँ वृद्ध पिता को आपका सहारा ही आवश्यकता है, आपके सहारे की आवश्यकता है। बट यू हैव टू बी हियर माई मदर बिकॉज आवर फादर ही वॉन्ट्स यू हियर। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास पहुँचे, सारा हाल बताकर उससे विदा मांगी। नाउ दे आर स्टार्टेड टू मूव। पर सीता ने कहा मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। बट सीता इज टेलिंग आई विल ऑल्सो कम विद यू, माई फादर हैज़ टोल्ड दैट वेयर एवर योर हस्बैंड इज गोइंग यू हैव टू गो। राम को सीता की बात माननी पड़ी। नाउ राम ही इज एक्सेप्टिंग। लक्ष्मण भी वहाँ आ गए। लक्ष्मण इज ऑल्सो टेलिंग आई विल ऑल्सो कम विद यू। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। सो ऑल दे आर हियरिंग अबाउट दिस डिसीजन। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे। सो ऑल दे आर स्कोल्डिंग दशरथ एंड कैकेयी अबाउट दिस थिंग। राम सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। एज आई शोन यू इन दैट पिक्चर, राम लक्ष्मण एंड सीता दे आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ फादर। महाराज दर्द से कराक रहे थे। राम को कक्ष में आया देख महाराज दशरथ उठकर बैठ गए। नाउ दशरथ ही इज ब्लेसिंग। उन्होंने कहा मुझे बंदी बना लो और राम राज्य संभालो। प्लीज़ यू अरेस्ट मी एंड यू प्लीज़ गेट दिस थॉर्न। यह कक्ष में आया देख राज्य सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। व्हाट फादर इज टेलिंग, दिस थॉर्न इज फॉर यू, ओनली फॉर यू, केवल तुम्हारा। राम बोला मुझे राज्य का लोभ नहीं, आई डोंट वॉन्ट दिस थॉर्न। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। यू प्लीज़ ब्लेस अस एंड यू प्लीज़ सेंड अस। राम लक्ष्मण और सीता का वनगमन। नाउ राम सीता और लक्ष्मण वकल्क वस्तु धारण कर वन जाने के लिए तैयार हो गए। वकल्क वस्तु दैट मीन्स द ड्रेस which the saints are usually used to wear, kavi udai, like that we will tell now that all are wearing that and they are moving। सबकी आंखों में आंसू थे। all of them they are crying, पुरुष महिलाएं, so everybody they are crying। जवान बच्चे सभी रो रहे थे। so all are crying। राजा दशरथ तब तक रथ की ओर लगातार देखते रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल ना हो गया। इसके बाद वे धरती पर गिर पड़े। सो आफ्टर सेंडिंग राम ही वॉज वॉचिंग द चैरिट टिल द आइज आर एंड। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, ही फॉल डाउन। सुमंत्र की वापसी। शाम होते होते राम सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे पहुँचे। एट लास्ट दे वेंट टू द बैंक ऑफ रिवर गंगा। श्रृंगवरेपुर गांव के निशासदार के अतिथि के रूप में उन्होंने रात में वहीं
विश्राम किया. So they are staying in that place. अगली सुबह उन्होंने मंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया. Now they are sending that मंत्री बैक. सुमंत्र के खाली रथ को देखकर लोगों ने उसे घेर लिया. So सुमंत्र is the boat rider. After seeing his boat empty, the people they are asking, वे राम के बारे में जानना चाहते थे. They are asking about राम. सुमंत्र की आंखों में आंसू थे. But he was crying. उन्होंने एक एक कर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया. Now they are answering. He is answering. पर इससे महाराज को संतोष नहीं हुआ. वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए. So after 6 days what happened? दशरथ he has died. दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद को विस्मर कर भरत को तत्काल बुलाने के लिए घुड़सवार दूत रवाना करवा दिया. So after the death of Dasarath what happened? They are sending a person to call Bharat, and then what is happened you have seen here. So Ram and Lakshman and Sita finally they went to forest for 14 years. That is only the story of Ram ka Vangaman. I hope you all have understood. Next we will see the classwork for this lesson, Ram ka Vangaman. Children, please take your classwork note, write very neatly what I am going to tell you now. So for this lesson the classwork is very simple, so that I will give you. For these both lessons I will give you the PDF for classwork also, so that it will be easy for you to understand. So take your classwork and start writing. So now we are going to see, choose the correct answer. First one, रानी कैकेयी ने दशरथ के बारे में सुमंत्र से क्या कहा? What रानी कैकेयी she is telling about दशरथ to सुमंत्र? वे राम से बात नहीं करना चाहते. He don't want to speak with राम. वे राम के राज्याभिषेक के उत्सव में सारी रात जागते रहे हैं और बाहर आने से पहले राम से कुछ बात करना चाहते हैं. वे आपसे मिलना नहीं चाहते, इसीलिए आप चले जाइए. वे आपके साथ लक्ष्मण से मिलना चाहते हैं. सो द आंसर इज़, वे राम के राज्याभिषेक के उत्साह की सारी रात जागते रहे. सो ही इज़ अवेकिंग फॉर फुल नाइट फॉर राम. ही इज़ गोइंग टू सिट इन अ टॉन. और बाहर आने से पहले राम से कुछ बात करना चाहते थे. ही वॉन्ट्स टू स्पीक समथिंग विद राम. सो सेकेंड वन इज़ द आंसर. सेकेंड वन, महाराज दशरथ राम से क्या नहीं कह पाए? व्हाट ही इज़ नॉट एबल टू टेल टू राम. रानी कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान की भरत का राज्याभिषेक व राम को वनवास. He is not able to tell about Kaikeyi that I have given 2 promises to Kaikeyi. That only he is not able to tell. अपनी और कैकेयी के झगड़ने की बात. About the fight he is not able. अपनी बीमारी के बारे में, अपनी मजबूरी और लाचारी. So he is not able to tell about the promise. That is the second one. Third one, राम की शर्त और सदी हुई वाणी सुनकर कैकेयी क्यों प्रसन्न हो गई? By hearing the words from Ram, why she is getting happy? उसे लगा कि अब भरत के राज्याभिषेक में कोई बाधा नहीं. So confirmly भरत will get the turn. राम वनवास जाने को तैयार है. राम is ready to go वनवास. राजा दशरथ व्यर्थ चिंतित हो रहे थे. राजा दशरथ he is very uncomfortable. So these 3 options are correct. राजा दशरथ ने राम से क्या आग्रह की? What राजा दशरथ is telling to राम? यह राज्य सिंहासन तुम्हारा है. This throne is for you. तुम मुझे बंदी बना लो. You please arrest me and और राज्य संभालो. And you please be the king of this अयोध्या. फिफ्थ वन, राम के वनवास जाने के विचार से लक्ष्मण सहमत क्यों न थे? वाई द लक्ष्मण ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग. वे साथ जाना चाहते थे. ही वॉन्ट्स टू गो विद हिम. वे चाहते थे कि राम को अपने शौर्य के बल पर राज्य सिंहासन पर बैठना चाहिए. बाई यूजिंग हिज ब्रेवनेस राम ही शुड ओनली सिट ऑन द थ्रोन. वे माँ कैकेयी से बात करना चाहते थे.
ही शुड स्पीक विद कैकेयी। वे चाहते थे कि भरत से साफ और स्पष्ट शब्दों में बात की जाए। वी कैन स्पीक टू भरत। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस इन दैट विच इज़ द आंसर सेकेंड वन। वे चाहते थे कि राम को अपने शौर्य के बल पर राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। By using the braveness of him, he has to sit in a thorn, so that only Lakshman is not accepting that thing. Next we are going to see the last one, that is 6th one. महाराज दशरथ के राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती है? Where did the राजा दशरथ kingdom is ending? राजा दशरथ kingdom is ending at सरयू नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, चित्रकूट तक इनमें से कोई नहीं। सो द आंसर इज सरयू नदी के तट पर। सो द किंगडम इज एंडिंग एट सरयू रिवर, द एंड ऑफ द सरयू रिवर। सो चिल्ड्रन, दिस इज द 6 choose the best answer for your class work. So you please write this in your class works very neatly. I hope you all have understood this lesson, that is lesson 4, Ram ka Vangaman. Next we will move to the next one. Next we are going to see the next lesson, lesson 5, Chitrakoot mein Bharat. So this story belongs to the next one, that when Ram is going to Vanavas for 14 years, that time Bharat is going to meet his brother Ram, Lakshman and Sita in Chitrakoot. That only going to happen now. What is in this story we will see. So in this picture you can see Ram, Lakshman and Sita are there, and now Bharat, he has finally find out Ram, Sita and Lakshman, and he is coming to meet them in the forest. In this picture you can see them. So next in this picture you can see that Ram, he is hugging his brother Bharat when he is meeting them in Chitrakoot. So in this picture you can see Lakshman, Sita, Ram and Bharat, how they are meeting in Chitrakoot. This only has happened here. In this picture you can see clearly. So next in this picture, now Bharat, he is compelling his brother Ram to come back to palace. But Ram, what he is telling, no Bharat, I am having 14 years to be here to spend my days. I am not able to come with you, so you please return back to the palace. So that time Bharat, what he is telling, you please give your slippers to me. I will keep this in my palace, and I will do my kingdom very best with your slippers. So as I am in a palace, I am not able to control anything, so that you please give your slippers. I will keep it in a palace, and then I will lead the kingdom with the help of this. So he is getting the slipper from his brother, and he is taking it to the palace, and he is keeping that there, and he started leading the kingdom in a successful way with the help of. So let us see this story little briefly. So भरत को ननिहाल में बुलावा. So now भरत कैकेयी राज्य में अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से बिल्कुल अनिभय था, पर वे चिंतित थे. उन्होंने राम को एक सपना देखा था. जब वे अपने मित्रों को सपना सुना रहे थे, तभी अयोध्या से एक घुड़सवार दूत वहां आ पहुंचा. भरत का मन भी ननिहाल से उचाट हो रहा था. वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे. भरत 8 दिन बाद नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित अयोध्या पहुंचे. अयोध्या के बदले रूप को देख उन्हें मन में अनिष्ट की आशंका होने लगी. वे सीधे राजभवन में गए. महाराज अपने प्रसाद में नहीं थे, वे कैकेयी के महल की ओर गए. So now Bharat, he is coming back to the palace, and he is seeing that the situation of Ayodhya is totally different. He is ready to meet Dashrath, but Dashrath is not here. He is in the कैकेयी palace. कैकेयी ने उन्हें बताया कि महाराज का निधन हो गया है. Now कैकेयी is telling that Dashrath has died. यह सुन भरत विलाप करने लगे. कैकेयी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया.
कैकेयी ने उन्हें बताया। अंतिम समय में महाराज के मुंह में केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। So when the Dasharath is ready to die, that time he has told only 3 words, हे राम, हे सीते and हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। He didn't say anything about you। भरत की व्याकुलता बढ़ती गई। वे राम के पास जाना चाहते थे। कैकेयी ने उन्हें वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए राजगद्दी संभालने के लिए कहा। भरत अपना क्रोध नहीं रोक पाए। वे चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते, तुम अपराधनी हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। Now Kaikeyi, she is telling to his son Bharat that I have got two promise from Dasharath like this. So you are only going to take over the kingdom hereafter. That time Bharat, he is getting very angry and he is scolding his mother that you are a bad lady, you should not sue like that, I don't want this kingdom. इस बात मंत्रिणा और सब भी वहीं आ गए। भरत ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं राजपद ग्रहण नहीं करूँगा। आई एम नॉट रेडी टू सिट इन ए थ्रोन। उन्होंने सभासदों से भी कहा, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं राम के पास जाऊँगा, उनसे राजगद्दी संभालने की प्रार्थना करूँगा, मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे। वे चकरा कर धरती पर गिर पड़े। होश आने पर कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। कौशल्या भी आहत थी। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी। कहा, राम मेरे अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। सुबह तक शत्रुघ्न को भी यह पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। मंत्रा अयोध्या के घटनाक्रम के घबरा गई थी। शत्रुघ्न ने लपक कर मंत्रा की बाल पकड़ लिए। वे मंत्रा को खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत ने बीच बिचाव में उसे छोड़ दिया। So here in this paragraph what is happening now? Bharat, he is telling that I am not ready to sit in a throne. I want to meet Ram, Lakshman and Sita, and I want to make them to come back to the palace. And now he is going to meet Kaushalya and he is telling everything to Kaushalya that I will go back and I will call Ram, Sita and Lakshman back to the palace. What my mother did, I am not satisfied, because whatever my mother did I am not able to digest. So like that he is telling to Kaushalya. And what happened that time, now in between this Shatrughan, he came to know that who has given this idea to Kaikeyi. Now he find out that Mantra, she only did this. Now he is catching Mantra and bringing her to Bharat, and what he is doing, he is catching her hair and she started beated her. That time what Bharat is telling, okay, don't do that, leave her. भरत का राम से मिलने जाना। मुनि वशिष्ठ ने भरत से राजकन संभालने के लिए कहा। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर लिया। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चल पड़े। नाउ ही इज़ गोइंग टू मीट राम। राम ने चित्रकूट पहुंचकर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर रहना शुरू कर दिया था। नाउ राम ही इज़ इन चित्रकूट, ही इज़ हैविंग वन टेंट। भरत को राम के वहाँ रहने की सूचना मिल गई थी। नाउ भरत ही केम टू नो अबाउट दैट प्लेस वेयर राम इज स्टेइंग विद द टेंट। Finally, Bharat has reached to the place where Ram is staying and he is very eager to meet his brother. And then on the way, what happened, near to the Ganga river, they have kept so many boats. So when Ram, he is going to come back, that time they should not get any trouble. So and then he is making some soldiers to sleep in Bharadwaj ashram, and he is started moving next day. Now he is very very happy about hearing that Ram, he is in Chitrakoot only. Let us see what's happening next. Now Bharat, he is coming towards Ram's living place.
That time now Lakshman, he is seeing that a big force of army, that means the soldiers, it's coming towards us. I think Bharat is coming with the soldiers, and he is calling Ram and telling that Bharat is coming with the big soldiers team. I think he will kill us. That time Ram is telling, no, Lakshman, Bharat, he will never do this thing. He may come to meet us only, you don't worry. At last Shatrughan and Bharat, they both are coming to meet his brother. That time when they are seeing Ram, they both are going and getting the blessings of Ram, and then they all are sitting and that time what happened, Ram, he is hugging his two brothers with him, and he is telling, come and sit. That time Bharat, he is telling that our father is no more. By hearing that news, Ram feel very bad, and then now Bharat and Shatrughan, they both are compelling Ram to get back to the palace, but Ram, he is not ready to come. Vasishta is also telling that Ram, you have to come there and you have to do your duty. But what Ram is telling, Chandrama apni chamak chhod de. If the moon, it's not giving light, Surya pani ki tarah thanda ho jaye. If sun is going to be cold, but I am never do this thing that my father, he has given the promise to anybody. I have to do that perfectly, so I am not ready to come with you. Now Bharat is telling, if you are not ready to come with us to the palace back, so I will never go without anything. Please give your slippers to me. 14 years I will take the kingdom over my hand. So till you come back, I will keep your slippers there, and I will lead the kingdom in a successful manner. So that time Ram, he is giving his padkavo, that is slippers. He is giving his slippers to Bharat, and now they all are going back to the palace, and keeping that slipper, Bharat, he is leading the kingdom very, very successfully in a happy manner. So this is only happened in this Chitrakoot mein Bharat. So I hope you all have understood this chapter also, that is lesson 5 Chitrakoot mein Bharat. For this we are going to see the classwork now. Take your classwork note and start writing very, very neatly and perfectly what I am going to give you. Yes, now we are going to write 5. Choose the following. Choose the best answer in your classwork note. First one, भरत का ननिहाल किस राज्य में था? वेयर डिड ननिहाल सिचुएटेड? अयोध्या, मथुरा, केकय, इंद्रप्रस्थ. सो द आंसर इज केकय. मरते समय दशरथ के मुंह से क्या शब्द निकले? When the Dashrath, he is ready to die, at that time the 3 words has came from his mouth. What are they? हे राम, हे सीते, हे भरत. हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण. हे राम, हे सीते, हे कौशल्या. हे राम, हे सीते, हे कैकेयी. So the answer is हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण. थर्ड वन, भरत ने सभासदों को हाथ जोड़कर क्या कहा? What did the Bharat told to the people of अयोध्या? मैं निष्ठापूर्वक राज्य करूँगा. सदा पर असली हक मेरा है. मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं. मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मना कर लाऊँगा. वे ही गद्दी संभालेंगे, मैं उनका दास बनकर रहूँगा. मुझे राजकाज संभालना नहीं आता. मैं तो राम के निर्देशन में ही शासन सत्ता की संभाल करूँगा. सो द आंसर इज थर्ड वन. मेरी माँ ने जो किया, वॉट एवर माई मदर डिड, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं. आई एम नॉट सेटिस्फाइड. मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, आई विल कीप द प्रॉमिस ऑफ माई ब्रदर राम एंड आई एम टेलिंग, मैं राम के पास जाऊँगा. आई विल गो टू माई ब्रदर राम और उन्हें मना कर लाऊँगा. आई विल मेक हिम टू कम बैक टू द पैलेस. वे ही गद्दी संभालेंगे. ही इज़ ओनली गोइंग टू सिट इन अ थ्रोन. मैं उनका दास बनकर रहूँगा. आई एम गोइंग टू बी द सर्वेंट ऑफ माई ब्रदर.
फोर्थ वन, महर्षि भरद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था? वेयर डिड महर्षि भरद्वाज आश्रम सिचुएटेड? गंगा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, गंगा यमुना के संगम पर, यमुना नदी के किनारे. सो द आंसर इज गंगा यमुना के संगम पर. फिफ्थ वन, राम ने अयोध्या जाने से इनकार किया तो भरत ने उनसे क्या मांगा? When Ram he is telling that I am not ready to come back to Ayodhya, what Bharat is asking to him? The answers are खड़ाऊ, धनुष बाण, पगड़ी, वस्त्रों का एक जोड़ा. खड़ाऊ स्लीपर्स, धनुष बाण bow and arrow, पगड़ी the headband, वस्तुओं का एक जोड़ा one cloth which Ram is wearing. The answer is khadavu, that means slipper. So again one more time I will repeat, listen carefully. भरत का ननिहाल किस राज्य में था? अयोध्या, मथुरा, केकई, इंद्रप्रस्थ. The answer is केकई. भरत मरते समय दशरथ के मुंह से क्या शब्द निकले? हे राम हे सीते हे भरत, हे राम हे सीते हे लक्ष्मण, हे राम हे सीते हे कौशल्या, हे राम हे सीते हे कैकेयी. सो द आंसर इज हे राम हे सीते हे लक्ष्मण. थर्ड वन, भरत ने सभासदों को हाथ जोड़कर क्या कहा? मैं निष्ठापूर्वक राज्य करूँगा, सत्ता पर असली हक मेरा है, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मना कर लाऊँगा, वे ही गद्दी संभालेंगे, मैं उनका दास बनकर रहूँगा. मुझे राजकाज संभालना नहीं आता, मैं तो राम के निदर्श में ही शासन सत्ता की संभाल करूँगा. सो द आंसर इज थर्ड वन, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मना कर लाऊँगा, वे ही गद्दी संभालेंगे, मैं उनका दास बनकर रहूँगा. नाउ द फोर्थ वन, महर्षि भरद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था? गंगा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, गंगा यमुना के संगम पर, यमुना नदी के किनारे. सो द आंसर इज गंगा यमुना के संगम पर. फिफ्थ वन, राम ने अयोध्या जाने से इनकार किया तो भरत ने उनसे क्या मांगा? आंसर्स आर खड़ाऊ, धनुष बाण, पगड़ी, वस्त्रों का एक जोड़ा. द आंसर इज खड़ाऊ, that is slipper. So children, these are the 5 choose the best answers which you are going to copy in your classwork note. So I think you have understood this lesson, that is Chitrakoot mein Bharat. Please write your classwork note very neatly so that you can follow that very clearly for your exams. Please copy this in your classwork note very neatly. So till these two lessons has been over. So children, I hope you have understood that these two lessons, lesson 4 Ram ka Vangaman and then the lesson 5 Chitrakoot mein Bharat. So these two lessons are the story of the Ayodhya Kand of Ramayan. Okay. So I hope you all have understood these lessons, and I have given little bit classwork also that you have to copy in your classwork note. So children, as I told you, the coronavirus is spreading more, so please be careful, stay in your home. Instead of going out, we can watch our videos and we can complete our classworks and we can make our worksheets to be completed, right? Okay, so as I told you, hard work leads to success. So when you are watching this video, then only you can understand very clearly the concept, because when you listen this carefully only you can understand the meanings of the words which is given here.
And then children, one more important thing, that you should not keep your classwork note pending. When the teachers, they are giving timetable for you to submit your classwork, so please submit your classworks in time, don't be late. Now also we are getting only little classworks only, all are not submitting properly. Please complete your classworks and try to submit, then only if you are having any mistakes in your classwork note, we can get the chance of correcting that, and so that it will be easy for you to study for your exams, because you can't study for your exams with the classwork note which is not corrected, right? So please try to submit your classwork notes and test notes on time. Don't keep anything pending. When you do everything then and there, then only it will be easy for you to follow. So please do that. Don't go outside. Whenever you are going outside, please wear mask, use hand sanitizer and maintain social distancing, because this is a period we are in a big struggle. We have to overcome from this coronavirus. Okay children, obey your parents, eat foods which are having more immunity power, so that it will keep your health very, very clearly and healthy. And then one more thing children, when you are writing your classworks should be very neat and tidy, so that, because whenever the exams are conducted, for that also you are going to get the marks for your classwork, 5 marks, right? So for everything you are having marks, so that you have to write your classworks, you have to finish everything properly, so that you can gain that 5 marks. So without writing your exam itself, you are going to gain 20 marks for your internal and external, right? So please do that, follow that, complete your classworks very well. I will meet you with the next video class. Till that, wait for that. Dhanyavad.